In this lecture, we will discuss about the actin filaments and intermediate filaments of the cytoskeleton. In the previous lecture, we have discussed the detail of the microtubules that are very important components of the cytoskeleton. We have classified the cytoskeleton into three main components: microtubules that are the thickest of the three components, made up of the tubulin protein, globular tubulin proteins, and actin filaments and intermediate filaments. In the previous lecture, we have discussed the detail of the microtubules. Now we will discuss the actin filaments and intermediate filaments in detail. Starting with the actin filaments are also called the microfilaments. Microfilaments are thin solid rods. They are also called actin filaments because they are built from molecules of actin globular proteins. इनको हम actin filaments भी कहते हैं, microfilaments भी कहते हैं. Actin filaments क्यों कहते हैं? Because these filaments are built from a globular protein called the actin. Actin की वजह से these are called the actin filaments. Microfilament is a twisted double chain of actin subunits. जब actin subunit double chain में twist होंगे, they form the microfilaments. Besides occurring as linear filaments, microfilaments can form structural network when certain proteins bind along the side of such filaments and allow a new filament to extend as a branch. न्यू फिलामेंट्स बनते हैं. माइक्रोफिलामेंट्स स्ट्रक्चर नेटवर्क व्हेन सर्टेन प्रोटीन्स बाइंड अलोंग द साइड. जब उसकी साइड से कोई प्रोटीन्स बाइंड करती हैं तो उससे वो उसकी एक्सटेंशन होती है, उसके ब्रांच भी सिंथेसाइज हो सकते हैं. एक्टिन फिलामेंट्स अपीयर एज अ थ्रेड अबाउट 7 नैनोमीटर इन डायमीटर. चूंकि ये सबसे थिन होते हैं, इनका डायमीटर 7 नैनोमीटर होता है. Like microtubule, an actin filament has a structural polarity with the plus and the minus end. चूंकि माइक्रोट्यूब्यूल के पास प्लस और नेगेटिव होते हैं, एक्टिन फिलामेंट के पास माइक्रोफिलामेंट के पास भी प्लस और माइनस एंड होते हैं. That's why it is a polar, just like the microtubule. Actin filaments are thinner, more flexible and usually shorter than microtubules. थिनर होते हैं चूंकि डायमीटर सबसे कम है 7 नैनोमीटर, फ्लेक्सिबल है, कैन अचीव डिफरेंट पोजीशंस एंड यूजुअली शॉर्टर देन माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स से छोटे होते हैं. There are, however, many more of them, so that the total length of the actin filament in a cell is generally many times greater than the total length of all the microtubules. जो उनकी concentration है, जो उनका number है, वो microtubules से ज़्यादा होता है. The total length of the actin filaments are greater than the total length of the microtubules. Like microtubules, microfilaments seem to be present in all eukaryotic cells. जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स तमाम सेल्स में होते हैं, इसी तरह माइक्रोफिलामेंट्स भी तमाम सेल्स में मौजूद होते हैं. इन कंट्रास्ट टू कंप्रेशन रेजिस्टिंग रोल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो रोल है वो कंप्रेशन रेजिस्टेंट है. द स्ट्रक्चरल रोल ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स इन द साइटोस्केलेटन इज टू बियर टेंशन. ये टेंशन को बियर करते हैं, स्ट्रेंथ को और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, पुलिंग फोर्स को बियर करते हैं. A three-dimensional network formed by microfilament just inside the plasma membrane. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकल माइक्रोफिलामेंट्स. इनका रोल क्या होता है? दीज कॉर्टिकल माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प सपोर्ट द सेल शेप. तो ये सेल को सपोर्ट शेप प्रोवाइड करते हैं. दिस नेटवर्क गिव्स द आउटर साइटोप्लाज्मिक लेयर ऑफ ए सेल कॉल्ड द कॉर्टेक्स. ये जो नेटवर्क होता है माइक्रोफिलामेंट्स का, जो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है, ये उसको जो आउटर साइटोप्लाज्मिक लेयर है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं. इट प्रोवाइड द सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी ऑफ द जेल. इसकी वजह से जो आउटर साइटोप्लाज्मिक लेयर है वो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी होती है, दैट फॉर्म ए जेल, इन कंट्रास्ट विद द मोर फ्लूइड स्टेट ऑफ द इंटीरियर साइटोप्लाज्म. इसके बरकस जो साइटोप्लाज्म का इंटरनल कंटेंट्स होता है वो ज्यादा फ्लूइड होता है, उसको हम सोल बोलते हैं. जो आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ होते हैं उसको हम जेल बोलते हैं. तो दिस जेल कंसिस्टेंसी ऑफ द आउटर साइटोप्लाज्म इज ड्यू टू द नेटवर्क of the microfilaments that is called the cortex. The structure of the microfilaments और the actin filaments हम डिस्कस किया कि actin filaments जो है ट्विस्टेड लेयर, डबल लेयर होती है एक्टिन फिलामेंट्स की. एक्टिन फिलामेंट्स जब आपस में ये सिंगल एक्टिन फिलामेंट से डबल एक्टिन यूनिट एक्टिन फिलामेंट्स का ये एक सिंगल लेयर बना रहे हैं, दूसरी सिंगल लेयर बना रहे हैं. जब ये दोनों सिंगल आपस में ट्विस्टेड हैं, इट विल फॉर्म द एक्टिन फिलामेंट्स. इसका जो प्लस एंड है, दिस इज द माइनस एंड. प्लस एंड में एडिशन हो रही है. अब एडिशन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एक्टिन फिलामेंट मस्ट बाइंड विद द एटीपी.
एटीपी इसके साथ बाइंड होगी, देन इट विल जॉइन विद द एक्टिन फिलामेंट्स एंड इट help in the elongation of the actin filaments. तो actin filament की elongation के लिए actin filament must bind, actin protein must bind with the ATP molecule. Polymerization of the actin filaments. Polymerization of actin filaments की जो polymerization है ये डिपेंड करती है actin with bound ATP. जब actin ATP के साथ बाउंड करेगी then it will polymerizes, it will increase its length. Then actin bind with the ATP, then it will dissociate from the microfilaments and it result in the shortening of the microfilaments. तो microfilaments short कब होगा? जब actin filaments ADP के साथ बाइंड होगी तो वो वहां से डिटैच होंगे और वो शॉर्ट होगा. जब actin filament या actin जो प्रोटीन है, actin प्रोटीन जब ATP के साथ बाइंड करेगी वो elongate होगी, उसकी polymerization होगी. actin ऐड होगी, उसकी polymerization होगी. In some kinds of animal cells, such as the nutrient-absorbing intestinal cells, bundles of the microfilaments make up the core of the microvilli. This is the specific location of the microfilaments. तो microvilli में mainly microfilaments होते हैं जो microvilli के core में होते हैं. अब इनका main function क्या है? These delicate projections that increase the cell surface area, उसके surface area को increase करते हैं, that help in the absorption of the maximum food from the intestine. Thousands of actin filaments and thicker filaments made up of protein called myosin interact to cause the contraction of the muscle cells. तो actin filaments जब myosin के साथ act करते हैं तो they help in the contraction of the muscle cells. तो muscle cell में भी actin filaments मौजूद होते हैं जो muscle की contraction में helpful होती हैं. Contraction of the muscles with the help of the actin filament and the myosin filament. These are the actin filament present in the twisted form. These help in the contraction, while the myosin filament help in the relaxation. Myosin motors in muscle cells contraction. The walking of the myosin projection, the so-called the heads drive the parallel myosin and actin filaments past each other so that the actin filaments approach each other in the middle radioles. This shortens the muscle cells. Muscles contraction involves the shortening of many muscle cells at the same time. So in summary, we can say that actin filaments are in association with the myosin help in the contraction of the muscles. So actin filaments muscle cell का बहुत important component है. In the unicellular eukaryote amoeba and some of our white blood cells, localized contractions brought about by actin and myosin are involved in the amoeboid crawling movement of the cells. जो amoeboid movement है, crawling movement है cells की, उसमें हमारे जो white blood cells हैं या amoeba है वो भी डिपेंड करते हैं टोटल एक्टिन और myosin filaments पे. The cells crawl along the surface by extending cellular extensions called the pseudopodia, from the Greek pseudo false and pod mean foot and moving towards them. तो false foot की मदद से जो movement होती है amoeba में, that is due to the actin filaments. Amoeboid movement of the amoeba. The interaction of actin filaments with myosin causes contraction of the cells, pulling the cell, trailing it, and forward it for its movement. The outer cytoplasm, that is called the cortex, that is just beneath, just beneath of the plasma membrane. It is in like the gel consistency due to the actin network. जो इनर साइटोप्लाज्म है वो फ्लूइड है, मोर फ्लूइड है क्योंकि इसमें एक्टिन फिलामेंट्स थोड़े से कम है. जो एक्सटेंडिंग सीडोपोडियम जो फॉल्स फुट की जो स्ट्रक्चर है दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द अमीबा इज ड्यू टू द एक्टिन फिलामेंट्स. जो एक्टिन फिलामेंट्स एक्टिव होते हैं चूंकि पेरिफेरी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक्टिन फिलामेंट्स का नेटवर्क होता है जो कॉर्टेक्स बनाते हैं. ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है दीज हेल्प इन द मूवमेंट. These help in the formation of the pseudopodia of the amoeba that help in the movement of the amoeba in specific direction. In plant cells, both actin and myosin interactions contribute to cytoplasmic streaming. That is the movement of the cytoplasm, a circular flow of the cytoplasm within the cell. जब cytoplasm circular flow करेगा, that is called cytoplasmic streaming. उसमें भी actin myosin interaction helpful होती है. This movement, which is especially common in large plant cells, speeds the distribution of material within the cell. तो ये इस जो cytoplasmic streaming का जो function है, that mainly involved in the distribution of material within the cell, वो भी डिपेंड करते हैं एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन पे.
The cytoplasm streaming in the plant cells. The chloroplast, that is the machinery of the photosynthesis, help in the formation of the glucose molecule by the process of photosynthesis, and it help in the movement of the material inside the cell, that is the cytoplasm streaming. A layer of cytoplasm cycles around the cell moving over a carpet of parallel actin filaments. Myosin motor attached to organelles in the fluid cytosol may drive the streaming by interacting with the actin. So actin और myosin दोनों helpful होती हैं in the streaming of the cytoplasm, that help in the transport of material in different areas of the cell. Specific functions of the actin filaments जो हमने previous discuss किए, that is the location and the general function different areas. तो हम उसको अगर स्पेसिफाई करें, समराइज करें, actin filaments के जो फंक्शन है मसल कंट्रैक्शन. Actin filaments along with the myosin help in the muscles contraction and muscle movement. Actin filament help in the cell movement. जो हमने सीटोपोडिया अमीबा में हमने सिंथेसाइज किए जो मैट्रिक्स जो कॉर्टेक्स बना रहे हैं, हेल्प इन द सेल मूवमेंट. तो जाहिर है जब मसल कंट्रैक्ट होंगे देन इट विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिकिंग, जो मुख्तलिफ ट्रैफिकिंग है, जो ट्रांसपोर्ट है, उसको भी एक्टिन फिलामेंट्स कंट्रोल करते हैं. एक्टिन फिलामेंट्स हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल शेप. यूकैरियोटिक सेल शेप को भी एक्टिन फिलामेंट्स कंट्रोल करते हैं. जो कार्टेक्स बना रहे हैं आउटर साइटोप्लाज्मिक में, वो भी एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं. साइटोकाइनेसिस, जो क्लीवेज फरो बनता है, जो कंट्रैक्टाइल रिंग बनता है ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द सेल, जो साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, दैट इज ड्यू टू द एक्टिन फिलामेंट्स. Cytoplasm streaming, the movement of the material within the cell, is due to the actin filaments. So basic functions are muscle contraction, cell movement, intercellular transport, trafficking, maintenance of eukaryotic cell shapes, cytokinesis, and cytoplasmic streaming. MREB are the microfilaments that are present in the eukaryotes, control the width of the cell. तो यूकैरियोट्स में जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं उसको MREB बोलते हैं, वो वहां पे सेल की विड्थ को कंट्रोल करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स MREB. एक्टिन फिलामेंट स्पेसिफिक ड्रग्स, वो ड्रग जो एक्टिन फिलामेंट स्पेसिफिक एक्ट करती हैं, उसमें फेलियोडीन बाइंड्स टू स्टेबलाइज द फिलामेंट्स. साइटोकैलासिन caps filament plus ends preventing the polymerization there, and latrencholine binds actin monomers and prevents their polymerization. These are different drugs that can affect the actin filaments. Intermediate filaments, the last component of the cytoskeleton. Intermediate filaments are named for their diameter, which is larger than the diameter of microfilaments but smaller than that of microtubules. जो इंटरमीडिएट का फिलामेंट का जो डायमीटर है वो इन बिटवीन द माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट से. माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर 25 नैनोमीटर है, माइक्रोफिलामेंट्स का डायमीटर 7 नैनोमीटर है, जबकि इंटरमीडिएट का फिलामेंट्स का जो डायमीटर है दैट इज इन बिटवीन 10 to 12 नैनोमीटर है. That's what is called the intermediate filaments. These filaments averaging 10 nanometer in diameter are more stable, strongly bound than microfilaments. इनकी स्टेबिलिटी टफ होते हैं, सबसे टफ होते हैं, साइज में मिडल है लेकिन टफ तरीन है. माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स से टफ होते हैं. Unlike microtubules and microfilaments, which are found in all eukaryotic cells, intermediate filaments are only found in the cells of some animals, including vertebrates. चूंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स तमाम सेल्स में होते हैं, eukaryotic cells में, लेकिन intermediate filaments are only found in some animal cells like the vertebrates. In some animals like the including vertebrates. तो ये तमाम में मौजूद नहीं होते. Specialized for bearing tension like the microfilaments, ये specific जो इनका रोल है. Intermediate filaments are a diverse class of cytoskeleton elements. Each type is constructed from a particular molecular subunits belonging to family of proteins whose members include the keratins. इसकी जो composition है वो different area में मुख्तलिफ होती है. तो keratins are the proteins that form the intermediate filaments mainly in the hairs and nails. Microtubules and microfilaments in contrast are consistent in diameter and composition in all eukaryotic cells. इसके बरकस अगर हम microtubules या microfilaments की बात करें, उनकी जो consistency और diameter वो सेम है, वो तमाम सेल्स में उनकी कंपोजिशन सेम है. माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन अल्फा डाइमर से मिलकर बनती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनती हैं, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट की जो कंपोजिशन है ये वेरी करती है फ्रॉम सेल टू सेल.
Structure of the intermediate filaments. Intermediate filaments, it is the protein having two terminal, N terminus and the C terminus. This is the single proteins. जब ये प्रोटीन इंटरवाइन हो जाएगी दूसरी प्रोटीन के साथ, that will form the dimer. जब दो डाइमर आपस में इंटरवाइन होंगे, that will form the टेट्रामर. टेट्रामर हो जाएगा ये, चूंकि यहाँ पे अगर इसका एन टर्मिनल इस तरफ है तो दूसरी प्रोटीन का भी एन टर्मिनल इस तरफ होगा, अगर इसका सी टर्मिनल दोनों का इस तरफ होगा. दैट्स व्हाई दीज आर द नॉन पोलर प्रोटीन्स एज कंपेयर टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द माइक्रोफिलामेंट्स. जब ये टेट्रामर आपस में कंपोज होंगे, कंबाइन होंगे, दे विल फॉर्म द प्रोटोफिलामेंट्स. Protofilaments will form the protofibrils and the protofibrils will form the thread-like structure that is called the intermediate filaments. Intermediate filaments. तो intermediate filaments की जो composition है protofibrils, protofilaments, then the tetradimer and dimer, tetramer, dimer and the monomers. तो ये मुख्तलिफ जो प्रोटीन्स हैं वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन से एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स उसकी लोकेशन भी डिपेंड करते हैं, वो उससे स्पेसिफिक प्रोटीन से मिलके बनते हैं. Intermediate filaments are more permanent fixtures of cells than the microfilaments and microtubules, which are often disassembled and reassembled in various parts of the cell. Even after cell dies, intermediate filaments network often persist. Cell की death के बाद intermediate filaments persist करते हैं. For example, the outer layer of our skin consists of dead skin cells full of keratin filaments. Chemical treatments that remove microfilaments and the microtubules from the cytoplasm of living cells leave a web of intermediate filaments that retain its original shape. It means these are the tough as compared to microfilaments and microtubules. Intermediate filaments are especially sturdy and that they play an important role in the reinforcing the shape of a cell and fixing the position of certain organelles. ये सेल की शेप को रिइंफोर्स करने में और पोजीशन को फिक्स करने में इंटरमीडिएट फिलामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल में. फॉर इंस्टेंस the nucleus typically sits within a cage made of intermediate filaments fixed in location by branches of the filaments that extend into cytoplasm. न्यूक्लियस को भी जो फिक्स करते हैं वो उसको लोकेशन में फिक्स करने वाला इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है. Other intermediate filaments make up the nuclear lamina which lines the interior of the nuclear envelope. जो न्यूक्लियर एनवेलप के इंटीरियर में जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो न्यूक्लियर लेमिना बना रहे होते हैं, उसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं. तो इन जनरल वी कैन से दैट intermediate filaments help in the reinforcement of the shape of the cell, fixing the position of certain organelles, and fix the location of the and the branches, fix the location of the nucleus and form the nuclear lamina. By supporting a cell shape, intermediate filaments help the cell carry out its specific function. जब सेल की शेप को सपोर्ट करेगा, then cell perform different functions. For example, the network of intermediate filaments anchor the microfilaments supporting the intestinal microvilli. जो intermediate filaments का जो network है, that help in the anchor in the attachment of the microfilaments in the intestines. Thus, the various kinds of intermediate filaments may function together as a permanent work framework of the entire cells. तो मुख्तलिफ intermediate filaments आपस में combination में काम करते हैं. They form the framework of the entire cell. Intermediate filaments can be grouped into four classes. Keratin filaments, they are mainly found in the epithelial cells. Vimentin and the vimentin-related filaments in the connective tissue cells, muscle cells, and supporting cells of the nervous system, that are the glial cells. Neurofilaments in the nerve cells, and nuclear lamins which strengthens the nuclear envelope. Filaments of each class are formed by a polymerization of their corresponding intermediate filament subunits. जो हर फिलामेंट से इंटरमीडिएट फिलामेंट से उसकी जो पोलीमराइजेशन होती है, that is due to the specific इंटरमीडिएट फिलामेंट सब यूनिट्स. अगर केराटिन्स हैं तो केराटिन्स मिलकर बनाएंगी, वाइमेंटिन्स हैं तो वाइमेंटिन्स मिलकर बनाएंगी. अगर न्यूरोफिलामेंट्स हैं तो वो नर्व सेल्स को न्यूरोफिलामेंट्स बनाएंगे और न्यूक्लियर लेमेंट्स तो उसी को वो पॉलीमराइज करेंगी. This is the classification of the intermediate filaments. Intermediate filaments may be classified on the basis of their area, location, cytoplasmic intermediate filaments, and the nuclear intermediate filaments. Cytoplasmic intermediate filaments mainly composed of keratin filaments, mainly found in the epithelial cells, while cytoplasmic that are present in the connective tissues cells, muscle cells, and glial cells are made up of vimentin and vimentin-related filaments, and the cytoskeleton found in the nerve cells are composed of the neurofilaments. And the nuclear
intermediate filaments are mainly made up of the nuclear lamins in all animal cells. जितने भी animal cells हैं उन सब में कुछ जो nucleus में intermediate filaments nuclear lamins होता है that form the nuclear lamins and in present the nucleus in all type of animal cells. That's all about the microfilaments and intermediate filaments. Both play important role in the integrity of the cells. Actin filaments are made up of actin proteins, while the intermediate filaments are made up of different types of proteins depending upon their locations. Thank you so much.